So hello friends, in this video we will write a program to check whether the given year by user is a leap year or it is not a leap year. So इस प्रोग्राम में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ साल लीप ईयर है या नहीं है. So there is a hint is that an year is a leap year if it is divisible by 4 but not divisible by 100 unless it is also divisible by 400. इसका मतलब है कि अगर कोई साल 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है. अगर कोई साल 4 से डिविजिबल है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर कंसिडर किया जाता है. तो इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज भी करेंगे. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we will definitely make use of if else statement, the conditional statement. We can we will also see nested if else statement and eventually we will optimize the same program. So the steps are simple. We will start with the program like hash include stdio.h, then integer main and return 0 and integer year. Integer year is required to read the value from user. So let's give the message to the user and read the value using our printf and scanf. Statement ends with semicolon. Scanf, let's read the value of the given year, percentage t and year. Okay, so we know there is a mod operator which help us to tell whether if a given number is divisible by is completely divisible by 4, is completely divisible by 100 and is completely divisible by 400 or not. Okay, so first condition is like if year mod 400 is 0, then it is a leap year. ओके, तो हम नई लाइन पर बोलेंगे कि ये एक लीप ईयर है. एल्स इफ हम ये भी बोल सकते हैं year is divisible by 4 means year mod 4 equal to 0. बट यहाँ पर अभी हम एक नेस्टेड इफ की कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं. एंड इफ year mod 100 is not equal to 0, जब वो साल 4 से completely divisible है उस वक्त वो 100 से completely divisible नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे this is a leap year. ओके, अदरवाइज हम बोलेंगे else ये कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो दिस इज नॉट अ लीप ईयर हो जाएगा. और ये भी कंडीशन फेल हो जाती है और ये भी कंडीशन फेल हो जाती है तब भी वो नॉट अ लीप ईयर हो जाएगा. ओके, ओके,
ये एक थोड़ा डिटेल प्रोग्राम है, इसको हम काफी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके, व्हाट इज आवर प्रोग्राम? Program is to find out whether the given year is leap year or not. So we are asking user to write the give us the year. We are reading that year in the year variable. First, we are dividing that year by 400 and finding out the remainder part is zero or not. अगर बाकी zero है तो वो completely divisible by 400 है, and in that case it is straightforward, it is a leap year. Okay. अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमें दो कंडीशंस चेक करने थे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4 completely, which is this condition, year mod 4 equals to 0, but at the same time number is not divisible by 100, year mod 100 is not equals to 0. तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि दिस इज अ लीप ईयर, और बाकी जो भी केसेस है इसमें हम उसे इन दैट केस वी विल से इट इज अ लीप ईयर, एंड वॉट एवर आर द रिमेनिंग केसेस वी विल से इट एज अ नॉट अ लीप ईयर. सो आप देख सकते हो यहाँ पर नेस्टेड इफ इल्स का एक एग्जांपल हमने लिया है, मॉड ऑपरेटर यूज किया है, उसके बाद इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी हमने इस प्रोग्राम में यूज किया है. तो ये सारी बातें मैं आपको दिखाना चाहता था, दैट्स व्हाई आई हैव chosen this way, but we can further optimize it in a single if statement. We can figure it out in a single if and else statement. We can convert this program, but first let's see whether this program works or not. Okay, so running the same program. 2000 2000 is a leap year क्योंकि वो 400 से ही डिवाइड हो जाता है. 2024 2024 is a leap year. इस कंडीशन में जाकर 2025 it is not a leap year. 1900 it is not a leap year. तो आप ये वैल्यूज देख सकते हैं. You can cross check whether the output is correct or not, but it is correct. Okay, so now let's move on to optimizing the same logic. Here we use mod operator, we have used equals to operator, we have used not equals to operator, and we have used nested if else. We can optimize this program further in a single condition, like if I can use double bracket here. Okay, if given number given year is completely divisible by 400, okay, then or operator I can add here, or then I have another condition, which is this condition: year is divisible by 400, year is divisible by 4, and it is not divisible by 100. Okay, so this is single condition. This entire condition is a single condition with AND operator, and this is condition number one. This is condition number two. Inside this condition number two, we have two more conditions with the this is AND operator. मतलब ये दोनों conditions अगर true है तो ही ये total condition true evaluate होगी, और ये एक single condition है, ये true या false evaluate होगी. यहाँ पर OR operator है,
तो या तो ये ट्रू चाहिए या तो ये ट्रू चाहिए, दिस एंटायर सेक्शन. इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, देन this year is leap year, otherwise it is not a leap year. So in a single line we can yeah, we can modify our logic, and let's run and see the same output is there or not. So 2000 divisible completely by 400, yes, so it is a leap year. 2024 divisible by 4 and not divisible by 100, it is a leap year. Okay, 1900 divisible by 4 but not divisible, but divisible by 100 as well, that's why not a leap year. So yeah, so this is optimized version of the same program, where we are using mod operator, equal to operator, or operator, and the brackets in a particular format. So I hope you like this leap year program, and if you have any questions to ask. Thank you.